अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। ओके, सो इट्स माय लास्ट डे एट होम। आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी आफ्टर अबाउट 1 month and 15 days। और ये देखें, ये मेरे कपड़े पड़े हुए हैं। मैंने सोचा जाना तो है ही, तो तैयारी तो कर लेनी चाहिए जल्दी जल्दी। और बहुत सारे कपड़े मैंने यहाँ निकाल के रखे हुए हैं जो लेके जाने हैं। कुछ यहाँ पड़े हैं और बैग यहाँ पड़ा हुआ है, तो जो सामान वगैरह चाहिए वो वहाँ पड़ा हुआ है। तो आई थॉट कि आप लोग भी साथ आ जाएं तो हम अच्छी सी पैकिंग कर लेते। आई हैव प्लेस्ड ऑल माई पैक्ड ऑल माई एसेंशियल आइटम्स एंड द ड्रेस विच आई एम गोइंग टू वियर फॉर टुमारो इज़ राइट हियर। इट्स विद ए शॉल। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं सुबह जाते हुए शॉल लेके जाऊँ या कोट पहनूँ। So I decided later. And here my water bottle, my bag, hand carry, and this one the largest bag. Now only one thing is left, which is the makeup. Here is my makeup box, but it's empty because I thought to fill it with the essential items. So you guys help me selecting my essential things. Come on, it's my makeup prayer. Look, each and everything. But I'll take only the essential things. So where to begin? First, pick up the box. Put it right here. I'm sitting on the floor, but it's okay. And पहले मैंने सोचा कि मैं ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं उठा के ऊपर रख लेती हूँ। ये है रिवाज का आई शेडो पैलेट। I bought it 6 months ago almost, and it's super cool. Look, wow, all nude shades. और ये मैंने चीज़ वैल्यू से लिया था और मुझे इसकी प्राइस 899 में मिला था ये। एंड अभी कल परसों मैं स्टाइलो पे गई तो वहाँ पे इसकी प्राइस 1300 थी एंड आई वॉज शॉक्ड वाई, बट इट्स ओके। Yes, no one can forget to take this in her hostel makeup bag, so put it here. And my Fit Me primer, place it down. My blender, beauty blender, and my iconic illuminator. It's the most important thing. Makeup तो complete ही नहीं होता अगर इसमें illuminator now. I love it. Honestly, it is worth using, honestly speaking. And here is the box, but I'm not taking it. I'm only taking the illuminator. And my brush, I'll take all my 3 brushes. I'm placing them here. Okay, now here is the base, but I don't need it, so just keep it down. मोस्टली मैं बेस के बगैर ही मेकअप कर लेती हूँ। अक्सर मुझे ज़रूरत फील ही नहीं होती, ज़रूरत फील हो तो ही करती हूँ। हाइलाइटर एंड कंटूर स्टिक, लुक, its color here is white, and let me show you from the downside. It's brown here. It's a contour and it's a makeup, it's a highlighter. Okay, and please ignore my mistakes, sometimes it happen, but it's okay. So it is the most important thing for my makeup, so I'm placing it with my essentials. Okay, now yes, लोशन। ऑनेस्टली मैं तो लोशन यूज़ ही नहीं करती थी बिकॉज बहुत हैवी हो जाता है और स्किन में अब्जॉर्ब भी नहीं होता था। बाकी बहुत सारे लोशन, फॉर एग्जांपल मैं नाम नहीं लूँगी तो, लेकिन ये लोशन आई सेड इट्स वर्थ यूजिंग ऑनेस्टली स्पीकिंग। प्राइस भी बहुत रिजनेबल है। सारी ज़िंदगी मैंने इसको यूज़ ना करके मतलब मुझे अफसोस हुआ कि पहले मैं ये क्यों नहीं यूज़ किया कभी। ओके, आफ्टर दैट ये है मेरा ब्लश ऑन पैलेट एंड माई ब्रदर बॉट इट फॉर मी। लुक, इट्स too beautiful. All light and dark shades are in it. Yes, okay, but it is with glitter, so I don't use it, but I often use it, but not much. So but I think I should take it with me. ठीक है, कभी फंक्शन हो जाता है तो आपको अच्छा सा तैयार होना होता है,
So I'm taking it with me. After that, I have what should I take? Oh yeah, mascara. Wow, it's Huda Beauty Mascara Waterproof. So I'm going to take it with me, and I also bought it from Chase. You can see it from here. Look. Okay, and its price was also reasonable. Let me see. It's written 125 here. Oh, can you see? Yeah, now you can see. It's written 125 rupees. And what's more, yes, it is the eyeliner, and it's the pen-like eyeliner. Look, you can see its nib. Look, look, look. Wow, how beautiful. और ये बहुत इजी है यूज़ करने में. ऐसी चीज़ें लिया करें जो यूज़ करने में बहुत आसानी हो जिनको. ठीक है, वरना चीज़ें बेकार ही जाती हैं. ट्रस्ट मी. So, I'm going to put it here. Okay, one more brush. Yes, I will definitely take it with me. ये मैं अंडर आईलिड्स ये यूज़ करती हूँ ग्लिटर अप्लाई करने के लिए. ग्लिटर मोस्टली ये तो इसमें रिवाज के आई शेडो पैलेट में ये जो लास्ट लाइन है ना, ये ग्लिटर्स की है, तो मोस्टली ये मैं अप्लाई करती हूँ अंडर आईलिड्स. आई बहुत एनलार्ज लगती है, तो साथ में ये इस ब्रश से अप्लाई करती हूँ. सो ये मैं लेके जाऊँगी. बाकी ब्रशेस कहाँ हैं, ये इनके साथ रख देते हैं. ओके, नाउ Maybelline concealer. Yes, I will take it with me definitely. No one can say no to concealer. Okay, put it here and look, right? Okay, and it's 25 number. इसका number है 25. Okay, and yes, I ordered it online. Okay, now it's the kajal. You can use it for kajal, pencil, lip liner, eyeliner. Okay, let me show you. It's in brown color. Look, it's the brown color. Let me open it. Okay, yes. Okay, so just close it and put it here. Yes. And anything left? No. It's a concealer packet. It's a highlighter and contour stick. And I don't have any other essential thing. Yeah. Here is the rose water. I'll definitely take it for me. Keep yourself and your face hydrated. Okay, so place it with the lotion. And anything left? No, nothing left. Have I taken my primer? Yes, here is it. Okay, and look, it's another eyeshadow palette. Look. All right, after that it's a lip gloss, glittery lip gloss, but I don't use it. I use it very often. And yes, I was going to forget it. Look, it's the silver or you can say white eyeliner pencil. कुछ लोग white यूज़ करते हैं, कुछ लोग silver यूज़ करते हैं, but I prefer this one honestly. White मुझे कभी भी suitable नहीं लगी. I always use this one and eye looks too much enlarged. Okay, so place it here, right? Yes. Anything left? No, nothing left. Now